At 10 p.m. on Verified this evening, our top focus is going to be bribery allegations versus the kidnapping charge. The fight between the Aam Aadmi Party and the BJP ahead of this election season. The centre is from Delhi to Gujarat, while the AAP is facing serious charge, ticket for cash allegations on their MLAs. The Aam Aadmi Party has hit back and has alleged kidnapping of their candidate in Surat, who has now withdrawn the candidature. Our second lead, ladies and gentlemen, is going to be the gruesome Shraddha murder case. We'll get you the details. Can you imagine? The murderer, the accused, took tips of how to get away with this murder from another gruesome crime. We'll get you the details. Our third lead is going to be the dog menace. Once again, a pet dog biting a child in Noida. What can be done to keep both the animals and the people around them safe? See you in the studio in just a short while. Good evening. Welcome to NDTV. This is Verified. It's 10 p.m. on your clock. I am Ankit Tyagi. Ladies and gentlemen, we had a full program planned for you, but just a short while back, just a few minutes back, I spoke to Shraddha Walkar's father, that 26-year-old girl whose story has captivated the entire country. People are only listening in, still not believing the kind of details that are coming in of her murder, which took place in the national capital 5 months back. Nothing can prepare you. No father can ever be prepared for this kind of a fate as far as her child, his daughter, any child is concerned. And nothing prepares a journalist, in fact, to talk to somebody who has lost his child in such a gruesome fashion. But it's important to hear Shraddha's father. It's important to hear what he is going through. It's important to hear the gravity of this situation from his point of view. Because, ladies and gentlemen, while we are in fact going through all the details in horror, this man is living his worst nightmare. Very quickly, before in fact I get to this important in fact conversation that we had with Shraddha's father, let me just very quickly tell you, just in brief, sum it up just to begin with, what all he told us. Shraddha's father in fact said that he's immensely sad. There is no way that he's still not come to the terms that he has lost his daughter. He also said, and you won't believe it, that Aftab, when he for the first time was confronted by Shraddha's father, was absolutely normal. Kept trying to sell a story to him. The father knew that there is something wrong and he knew that this man is lying. It took some time before the police could actually nab him. In fact, he was brought face to face with him. And he told me when for the first time, the police told him in the fashion in which Shraddha lost her life, he collapsed, he passed away, couldn't take the pain, couldn't bear what has happened to his daughter. Let me just play out this conversation that we had with Shraddha's father, because there is no one who is experiencing more pain than the man who has lost his daughter in the most gruesome fashion. I apologize in the beginning, ladies and gentlemen, if there are some, because it's very difficult even to frame questions when you're speaking to somebody who has gone through so much ordeal. Listen in to this exclusive conversation here on NDTV. सबसे पहले तो हमारी तरफ से कंडोलेंसेस, हमारी तरफ से हमारी संवेदनाएं आपको। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, इस समय बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, ये वक्त बहुत मुश्किल होगा, सोचना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन श्रद्धा के बारे में अब आप सोचते हैं तो आप सबसे पहले क्या सोचते हैं? मैं कभी क्या, मेरी लड़की मैं खो चुका हूँ तो मुझे तो पहले तो दुख ही होगा। मेरा एक मतलब हिस्सा चला गया घर का, तो मुझे बहुत ही मतलब बैड फील होता है। सर, कितने समय से श्रद्धा और आपकी बातचीत नहीं हो रही थी? कब से आप ऐसा था कि आप लोग बातचीत नहीं कर पा रहे थे? मुझे शायद 2021 मिड के बाद मेरी बातचीत नहीं होता। आखिरी बार क्या बात हुई थी कि ऐसा क्यों हुआ कि श्रद्धा और आपकी बातचीत बंद हो गई?
आखिरी बार तो मेरी बात ऐसी हुई कि मैं पूछताछ किया कि कैसी है तू, क्या कर रही है, कहाँ रहती है, कितना पूछ लिया। तो उसने सिर्फ जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ और बस ये हम लोग साथ में रहते हैं। ये जो अक्यूज्ड है आफ्ताब, इसके बारे में आपको पहले से पता था? हाँ जी, वो करीब 2020 में मेरी पहचान हो गई थी, जब मेरी वाइफ की डेथ हुई तब वो आता था मेरे घर पे। तो क्या आपको इनके रिश्ते से मतलब आपको पहले से इसके ऊपर कुछ ठीक नहीं लगता था? ये व्यक्ति आपको इनके रिश्ते से परेशानी? जी, मेरा इमीडिएट रिएक्शन ऐसे ही था कि श्रद्धा, ये मुझे रिश्ता पसंद नहीं है, मुझे मतलब मुस्लिम से शादी मत करो, मैं अच्छे लड़के से, हमारे बिरादरी के लड़के से शादी करूंगा। तो उसने फिर वो मना किया कि नहीं, मुझे वही अच्छा लगता है, मैं उससे रिलेशन रखना चाहती हूँ। तो क्या इसी कारण से फिर आपकी और श्रद्धा की बातचीत बंद हो गई? जी, उसी कारण से फिर श्रद्धा मुझे अवॉइड करने लगी। आफ्ताब जब ये आपको मिला तो उसके बाद एक तो धर्म की बात थी, उसके अलावा भी क्या आपको कभी लगा कि ये लड़का, इसके आचरण हाव भाव ठीक नहीं है? वैसे कभी ऑब्जर्व नहीं किया मैंने, कभी ऐसा वहाँ मतलब घर आता था तो नॉर्मली ऐसे ही नॉर्मल बात करता था, कभी ऐसे लगा नहीं। जी, जी। आपको कभी श्रद्धा के दोस्तों से या उसके बाद जब आपकी बातचीत बंद हुई तो आपको उसके बारे में पता कैसे चलता था कि श्रद्धा कहाँ है, क्या कर रही है, जब वो आपसे बात नहीं करती थी? तो नहीं, वो थोड़ा सारा जो कुछ भी बताया मुझे कि मैं बेंगलोर में रहती हूँ और हम लोग साथ में रहते हैं, ऐसे इतना ही बताती। आपको कब पता चला कि वो दिल्ली आ गई है? जब मैं मेरा उसका दोस्त है एक लक्ष्मण नागर करके, उसने मुझे कॉल किया था कि श्रद्धा का मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप जरा कोशिश कीजिए। तब मैं मतलब उनके ग्रुप में दोस्तों के साथ मिलना चालू किया, तो पूछना चालू किया। तब किसी से भी पता नहीं चला, तो मैंने फिर अपने लोकल पुलिस से बातचीत करके वहाँ पे केस दर्ज किया। सर, ये कब की बात है? ये कब आपको लक्ष्मण से बात हुई आपकी, और कब आपने पूरी कार्रवाई शुरू की? अगस्त 14 तारीख को उसने मुझे इन्फॉर्म किया। तब से फिर मैं उसके ढूंढने लगा उसको। जब पुलिस ने शुरुआत में आपने केस दर्ज किया तो पुलिस ने उसके बाद ये पूछताछ की इस व्यक्ति से जिसके बारे में आपने पुलिस को बताया था, आफ्ताब से? जी, मतलब उसने कुछ 27 अगस्त को उसको बातचीत की फोन पे, तो वो बोला कि नहीं मैं दिल्ली में हूँ। तो फिर लोकल पुलिस ने उसको यहाँ पे आने के लिए बोला, तो सही नहीं। आपकी आफ्ताब से कभी बात हुई? जी, तब वो आया 3-4 दिन बाद, तब मेरे से पहले मिला और मैंने फिर पूछा कि श्रद्धा कहाँ है, तो वैसे मुझे मालूम नहीं वो कहाँ गई, हमारा अभी ब्रेकअप हुआ है तो वो चली गई छोड़ के। तो मैंने पूछा कि फिर ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई, अभी ये लड़का लक्ष्मण उसने हमें बताया, तब पता चली। ये तो 2.5 साल से तुम्हारे साथ रह गई, तो मुझे पहले तुमने इन्फॉर्म करना चाहिए था या दोस्तों को बताना चाहिए था कि श्रद्धा हमसे अभी अलग है। तो उसने टाल दिया कि नहीं, वो तो अभी मेरा कोई संबंध नहीं है, तो मैं क्यों बताऊं। आपको तब शक हुआ कि कुछ इसने शायद कुछ गलत हुआ है श्रद्धा के साथ? तब से ही मुझे शक हुआ। ये ऐसे बातचीत करता है कि ये मुझे सब झूठ लगा और मुझे लगा
लगा कि ये कुछ तो गलत किया है उसने। तो उसके बाद आपने इससे पूछा और भी दोबारा पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, कहाँ है? हाँ, तब भी मैंने पूछा उसको वापस, जब पुलिस स्टेशन में जब आया जिस दिन ये केस दर्ज हुआ तब वो वापस आया था, तो तब भी वो वैसे ही झूठ बोलता था कि वो चली गई, हमारा ब्रेकअप हुआ है, यही बात दोहराया है उसने। जब आप उससे मिले थे और जो पुलिस स्टेशन में भी आया था, तो कभी आपको उसके हाव भाव से लगा था कि वो छुपा, मतलब ये इतना शातिर है या कुछ घबराया हुआ है या? जी, मैंने तो वैसे पुलिस को भी बताया कि ये सब बातें झूठ बोल रहा है, जो भी बोल रहा है। मैंने जब मतलब उसकी तो जिम्मेदारी बनती थी कि ये अगर श्रद्धा के साथ इतना प्यार करता था और 2.5 साल से उसके साथ में रह रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है उसका ख्याल करने की। वो ऐसे कैसे हाथ ऊपर कर सकता है कि मेरा कोई लेना देना नहीं इसके साथ। आपको लगा कभी कि कुछ उसके हाव भाव से कि वो डरा हुआ है या परेशान है, या बिल्कुल नॉर्मल होके बात कर रहा था? एकदम नॉर्मल होके बात करता था, कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि ये मतलब उसके सिर्फ वो बर्ताव की वजह से कि ये झूठ बोल रहा है, इतना ही मुझे समझ में आया कि ये कुछ गलत किया होगा। अब जब ये सब चीजें सामने आ रही हैं, मतलब ये आपके सामने मेरे लिए दोहराना भी बहुत मुश्किल है, जिस तरह की डिटेल्स अब सामने आ रही हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो वहाँ पे खड़ा भी नहीं हो पाया जहाँ स्पॉट से जब उसने सब ये किया था। मैं मतलब सुन के हैरान हो गया, मुझे सुनने में भी तकलीफ हो रही थी। आपको दिल्ली पुलिस ने पूरा सहयोग किया आपके साथ? दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा सहयोग किया। मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि उतने दिल्ली पुलिस इतनी सपोर्टिव है, मेरे लिए बहुत कुछ किया है उसने। सर, आपको जब मतलब मुझे माफ कीजिएगा मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, लेकिन जब आपको उस घर में लेके गए या आपको वो स्पॉट दिखाया जहां पर बॉडी को उसने छोड़ा था, बहुत मुश्किल होगा वो आपके लिए, जी। आप देख पाए? दिल्ली पुलिस बार बार मुझे वही कोशिश करते थे कि देखिए हम लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे, आप हमारे साथ उसके फ्लैट में जाएंगे, जहाँ उसने जो किया है वहाँ पे जाएंगे, सब जगह पे आपको देखना पड़ेगा। तो मुझे लेकिन वो देख नहीं पाया मैं सब कुछ, ये उसके घर में या फिर वो जंगल में कुछ भी देख नहीं पाया बराबर से। बहुत ही मतलब भयानक लग रहा था वो सब। श्रद्धा अब नहीं है सर, उसको आप कैसे याद करते हैं? तो मुझे तो अभी ऐसे हो रहा है कि मतलब क्या, अगर कुछ पहले पता होता तो शायद मैं कुछ कर पाता, बचाने की कोशिश करता था। अब तो वो हो चुकी है, उसके लिए तो अभी ये लड़के ने जो कुछ किया है उसकी सजा तो पूरी मिलनी चाहिए। बस क्या सजा मिलनी चाहिए सर इसको? उसको फांसी के अलावा कोई सजा नहीं है इसके लिए। इस हादसे के बाद जब वो पकड़ा गया, उसके बाद क्या आपके आमने सामना हुआ उससे? कब? अभी पुलिस के पकड़े जाने के बाद, पुलिस ने जब उसको अरेस्ट किया उसके बाद क्या वो आपके सामने आया? पुलिस ने आपके सामने लाया उसे? जी, वो उसने कन्फेस किया ना मेरे सामने भी। आपके सामने कन्फेस किया? मेरे सामने भी कन्फेस किया उसने 11 तारीख को। क्या कहा सर उसने? उसने कहा कि पुलिस ने पूछा कि क्या इनको जानते हैं, तब उसने जवाब दिया कि हाँ ये श्रद्धा के डैडी है। तो फिर दिल्ली पुलिस ने पूछा कि बता दो अभी क्या किया है आपने। तब तुरंत ऐसे ही बोलने लगा कि ये श्रद्धा इज नो मोर। मैं तो वहाँ पे ही कोलैप्स हो गया, मैं सुन ही नहीं पाया ये सब आगे की बातें। तो उन्होंने फिर उसको जाने दिया वैसे ही। फिर बाद में 2-4 घंटे के बाद फिर मेरे सामने वापस खड़ा किया और बोलने लगे कि ऐसे ऐसे हो गया, ये ऐसे ऐसे वाक्य उसने कन्फेस किया है। मैं बिल्कुल ही वो सुनने के मतलब कंडीशन में नहीं।
आपसे उसने कुछ कहा, माफी मांगी? वो सॉरी बोल रहा था तभी, लेकिन वो कुछ मैंने दिल्ली पुलिस के सामने ही बताया कि ये सब नाटक कर रहे हैं, ये सब मुझे मतलब इम्प्रेशन करने की कोशिश कर रहा है। सर बहुत आपके लिए बहुत दुख की घड़ी है। मैं माफी चाहूंगा कि मुझे आपसे ये सब चीजें पूछनी पड़ी, पर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। That was Shraddha's father. You know, it just still is playing in my head when he says that when he was brought face to face with this killer, this cold-blooded killer who did not give away for 5 months anything. His demeanor, his face, the way he spoke, his actions didn't give away that he is hiding such a big secret. And it just plays on my head when continuously in my head when I hear her father say that, you know, I was standing there and he said, she's no more, and he collapsed. You can't imagine the moment when a father is told that your daughter is no more. And of course, the killer is standing right in front of you. Our condolences to the father, to his family. But let's move on, ladies and gentlemen, and very quickly give you the latest as far as this investigation is concerned. Because every single day, day 3, the kind of things that day 3 has brought us here, in fact, what we are hearing on day 3 as well, it's beyond shocking. And I'm overusing this word shocking because what else do you say with the kind of things that are coming out? What sources have told us that the blood stains have been found in accused's kitchen. The police is doing a DNA sampling to see whether these are the blood stains of Shraddha. Her father's DNA sample has been collected because now the forensic evidence, the DNA sample is going to be very, very important. They will match from the bones and the other, in fact, remains that are being found. About a dozen bones have been recovered so far. It have been sent to the forensic labs. Shraddha's bag has been found from Aftab's residence, the place that they called home, which was the last place she was seen alive. Aftab's family is in contact with Delhi police. The police is also thoroughly going through the CCTV footage of this entire area. I mean, they are trying to map the entire Chhatarpur area. It's also very hard, in fact, to get the CCTV footage. But I just want to play out these visuals that you are seeing on your screens right now. This is not an old CCTV footage. It is a recent one where you see the police, in fact, taking some material from Aftab's residence in Chhatarpur and taking it with them for forensic evaluation. Now, there are some challenges as well. It's hard to get CCTV record. This one is latest, but going 6 months back, most people, their hard drives only store about 15 days of the data. So it will be difficult for police to get any CCTV footage of that time. Possibly that would help them piece the things together. Now, moving on, Aftab's last job was in a Gurugram call center. That's where he was working, and the police is also investigating that as well. Aftab was terminated for being absent for more than 6 to 7 days. Can we have those graphics on this big screen, please? I mean, the CCTV footage that I just told our viewers, but just to move on and tell our viewers that he was terminated from the, in fact, this call center where he was working. On May 18th, Shraddha and Aftab had a fight over household expenses. The quarrel happened between 8 p.m. to 10 p.m. and then Aftab, what the police is saying, that's the time when Aftab, in fact, on May 18th, strangulated her, killed her. And then the sordid tale started of trying to hide his crime, or trying to remove all the traces of this crime. Now, how did Aftab plan this entire murder? This is also, very, very disturbing details coming in right now. Cops have told NDTV that Aftab, they have received and found some clues from Aftab's phone search history. Aftab's search gruesome 2010 Dehradun murder. And let me remind you what this case was. In 2010, there was an Anupama murder case in which Anupama was killed and chopped by her husband in 2010. Now, Aftab followed this. He took tips, he took tutorials from this case,
picked up details. Aftab followed the 2010 case, the entire murder script. Anupama's husband had chopped her into 70 pieces. Imagine that, 70 pieces. Anupama's husband also froze her body parts in a refrigerator. Anupama's husband also scattered the body parts all over the forested area of Dehradun. Now, these are glaring similarities in Shraddha's and Anupama's murder. Imagine how he completely picked up from the entire gruesome details of that murder and enacted those details while he was trying to hide. Now, there are some unfinished tasks as far as this case is concerned, and this is going to be crucial in trying to make sure that Aftab deserves the strictest punishment as far as this murder case is concerned. The police is yet to recover the murder weapon. Shraddha's mobile phone has not yet been recovered. Shraddha's head has not been found. Clothes worn by Aftab and Shraddha on the day of the murder have not been found. He put them in a garbage bag and threw them in a vehicle, garbage collection vehicle. In fact, sources have also told that the important thing would be the murder weapon. Police will have to find the murder weapon before, in fact, they can nail Aftab as far as this case is concerned. Now, these are very, very important, in fact, details, ladies and gentlemen, that the police will have to piece together if they want to make a watertight case against Aftab. All right, we are right at the end of our show, and I just want to, as I promised you yesterday, it's the election season. I will give you quick, brief updates, a 2-minute update of the big election stories coming in from all across the country, Gujarat especially, and by polls as well. So let's very quickly tell you that. The first, in fact, Amit Shah's big road show in Ahmedabad. In fact, the Union Home Minister campaigned for the Bharatiya Janata Party in Gujarat. He held a road show in Ahmedabad with Chief Minister Bhupendra Patel. Meanwhile, the Chief Minister of Gujarat, that's the roundup number 2, wrap number 2, he filed his nomination today. Bhupendra Patel, the Chief Minister, has filed his nomination. He was accompanied by the Home Minister Amit Shah. Patel is fighting the election from the Ghatlodiya constituency in Ahmedabad. Arvind Kejriwal, who now wants to take the space from the Congress party as the principal opposition in Gujarat, also held a massive roadshow in Gujarat. His campaign continues. Our chief was in Gujarat. In fact, this leg of the campaign completed today. Delhi Chief Minister held a roadshow in the Valsad city. Kejriwal requested the voters to give him one chance. Ek Mauka Kejriwal Nu is their anthem. Now, meanwhile, the Congress party, which is the other contender, that's the detail number 4, has put out their final list of the candidates for Gujarat. So, Congress has put out all their candidates. The party has released a final list of 37 names as far as these candidates are concerned. We'll have to wait and see whether there will be still some protests, as we saw last time when the list came out from the rebel candidates. Meanwhile, just shifting focus from Gujarat, taking you to the bypoll of Mainpuri in Uttar Pradesh. BJP candidate against Dimple Yadav today filed his nomination. Raghu Raj Shakya will fight the bypoll in Mainpuri on the BJP symbol. He is up against Akhilesh Yadav's wife Dimple Yadav. Mainpuri, remember, the seat was vacated after the demise of Mulayam Singh Yadav, fondly known as Netaji. All right, that's all the time that we have in this edition of Verified. Thank you so much for being with us. Good night. I'll see you tomorrow.